नमस्कार। माइंस रूल 1955 की वीडियो सीरीज में आज चैप्टर 4 बी लेकर के मैं रथिन विश्वास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की रूबरू के तौर से आप सबको वेलकम करता हूं इस वीडियो में। आइए हम लोग जानते हैं चैप्टर 4 बी वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड सेफ्टी कमिटी इसके बारे में। इस चैप्टर गैजेट नोटिफिकेशन GSR 316 डेटेड 14 अप्रैल 1986 में ये इंसर्ट किया गया है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 ए को जान लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 बी के बारे में जानेंगे, जिसमें रूल 29 क्यू से रूल 29 डब्ल्यू तक शामिल है। रूल 29 क्यू वर्कमैन इंस्पेक्टर, 29 आर ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, 29 S action on report of workman inspector, 29T safety committee, 29U composition of safety committee, 29V function of safety committee, 29W implementation of recommendation of the safety committee। ये इस चैप्टर में शामिल है। हम लोग जानते हैं 29Q वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में। For every mine wherein 50 or more persons are ordinarily employed, the owner, agent, or manager shall designate their suitable qualified employees, three suitable qualified employees of the mine in consultation with the registered trade union in the mine, and where there are more than one registered trade unions, the union recognized as per procedure in practice, or the most representative union as per the membership records available at the point of time, and if there are no registered trade union, in consultation with the elected representative of the workmen as technical expert to carry out inspection of the mine on behalf of the workers employed therein. One is for mining operations, electrical stations and mechanical station। जहाँ पे 500 से ज़्यादा आदमी काम करता है, वहाँ पे ओनर, एजेंट और मैनेजर की तरफ से 3 सुइटेबल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को चुनना है वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए। जहाँ पे रजिस्टर्ड यूनियन है वहाँ पे रजिस्टर्ड यूनियन से, जहाँ एकाधिक रजिस्टर्ड यूनियन है वहाँ पे जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है या मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव जिस यूनियन में है, या जहाँ पे कोई रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है, तो यह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से ये वर्कमैन इंस्पेक्टर्स को चुना जाएगा, जो माइनिंग ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन तीनों में एक एक जना रहेंगे। When the number of persons employed in mine exceed 1500, जब नंबर ऑफ persons employed 1500 से ऊपर है, तब workman inspector shall be assisted by one additional workman inspector in mining discipline for every additional 1000 persons or part thereof। जब 1500 से ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड होंगे, तो माइंस इनका जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे उनको एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे। इस रेशियो में जब हर 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयड में एक माइनिंग मतलब एक्स्ट्रा रहेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, 500 पर्सन्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड होने पे 3 जाना चाहिए। जहाँ पे 1500 हो गया वहाँ एक और माइनिंग वाला, अब 4 जन वर्कमैन इंस्पेक्टर।
जहाँ 2500 हो गया, वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चाहिए। एवरी माइन the owner, agent, or manager shall constitute the manner laid down in clause a panel of workmen's inspector who may serve as substitute during absence of regular workman inspector. एक पैनल भी करना है जहाँ पे रेगुलर वर्कमैन इंस्पेक्टर्स नहीं होने से उनको सब्स्टिट्यूट हो सकता है। In the panel, there shall be at least one inspector is for mining, electrical and mechanical installation and operations. इस पैनल में माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का एक एक सब्स्टिट्यूट मिनिमम होना है। Next, no person shall act as workman inspector for a mine unless कोई वर्कमैन इंस्पेक्टर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे बता रहा है। ही प्रोसेस ओवरमैन और फोरमैन सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। जो माइनिंग वाले होंगे वो इधर कोल माइंस के लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट और मेटल बेस माइंस के लिए फोरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट in relation to electrical machinery installation in mines, a person holding valid electrical supervisor certificate of competency covering mining installation issued under sub-rule 1 of Rule 45, read with clause 2 of sub-rule 1 of Rule 131 of the Electricity Rule 1956 framed under Electricity Act 1910 shall be so designated। जो इलेक्ट्रिकल वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे उन्होंने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें माइनिंग इंस्टॉलेशन कवर हो। In relation to other machinery and mechanical appliance installed in mine, a person's appointed so or to secure installation, running and maintenance in safe working order of machinery in the mine being not less than status than that of overman, mine foreman or electrical supervisor shall be designated। मैकेनिकल के लिए जहाँ मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस के लिए देखना है वहाँ पे उनका स्टेटस, उनका जो ग्रेड है ओवरमैन, माइनिंग फोरमैन है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से इक्विवेलेंट होना है। One more clause is this is the certification and he has at least 5 years of experience in mine including at least 2 years of working in the mine for which he is nominated। टोटल माइनिंग माइंस में 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर उसी माइंस में होना चाहिए। He has undergone an orientation training course of workman inspector consisting not less than 30 lectures and demonstration of not less than 2 hours duration is। और इनको वर्कमैन इंस्पेक्टर्स के लिए एक ट्रेनिंग में जाना चाहिए जिस ट्रेनिंग में मिनिमम 30 लेक्चर्स हो और हर लेक्चर्स मिनिमम 2 hours duration हो in accordance with the syllabus specified by and at a center approved by the chief inspector by a general or special order। और इसके लिए इनको जो ट्रेनिंग होगा ये ट्रेनिंग उस एक सिलेबस जो अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे उस अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर को चीफ इंस्पेक्टर जनरल या स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से उसको बताएंगे। The workman inspector shall perform the duties mentioned in clause A of sub-rule 1 of Rule 29R for 2 days in every week। वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो ड्यूटी है सब रूल 1 में जो बताया गया है रूल 29R में, इसके लिए 2 दिन हर हफ्ता में 2 दिन ये काम करेंगे। On the remaining days of the week, he shall perform his normal duty unless called upon perform the duties mentioned in clause B, C of sub-rule 1 of Rule 29R। ये बाकी दिन में अपना नॉर्मल काम करेंगे 2 दिन छोड़ करके, और उनको अगर बुलाया जाता है सब क्लॉज बी एंड सी के लिए
सब रूल ऑन ऑफ 29 आवर के लिए, तब वो ड्यूटी करेंगे. The owner agent of manager shall afford the workman inspector all reasonable facilities for making any entry, inspection, measurement, examination, or inquiry in connection with his duty. An official of the mine shall accompany the workman inspector during his inspection. The workman inspector may carry out his inspection at any time. वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए माइंस मैनेजमेंट उनको सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, रिजनेबल फैसिलिटीज जो ज़रूरत है, और एक ऑफिशियल्स उनको साथ में अकम्पनी होंगे, और ये किसी भी टाइम पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं. When there occurs an accident or dangerous occurrence in or about a mine, the owner agent or manager shall forthwith inform the occurrence occurred to workman inspector about the accident or the occurrence. अगर कोई एक्सीडेंट या डेंजरस ऑकरेंस होता है तो ओनर एजेंट मैनेजर की तरफ से वर्कमैन इंस्पेक्टर्स को भी इसका सूचना दिया जाएगा. द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर टू impede or obstruct the working of the mine. वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना पावर माइंस का काम को प्रभावित करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए यूज नहीं करेंगे. The workman inspectors nominated under sub-rule on shall, unless he resign from his office, hold the office for a period of 3 years from the date of his nomination and shall be eligible for on renomination. वर्कमैन इंस्पेक्टर जिनको नॉमिनेट किया जाएगा वो अगर रिजाइन नहीं करते तो 3 साल के लिए रहेंगे, और एक बार और रीनॉमिनेशन हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 6 years एक वर्कमैन इंस्पेक्टर बन सकता है. No owner, agent or manager shall take any action against workman inspector for any of his action in discharge of his duty and function laid down in these rules. वर्कमैन इंस्पेक्टर्स रूल का हिसाब से अपना काम करने से ओनर एजेंट मैनेजर उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेंगे. 29R ड्यूटी ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर. वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्या ड्यूटी है? द ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी A. To inspect all shafts, inclined roads, workplaces, and equipment thereat, including the equipment for convenience and transport of worker. वर्कमैन इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन करेंगे shaft, inclined road, workplace, equipment के लिए. ये जो इंस्पेक्शन करेंगी, इस इंस्पेक्शंस के लिए अपना वर्किंग डेज का 2 days वर्कमैन इंस्पेक्टर देंगे. In case of any urgent or immediate danger that comes to his notice, to inform the manager and inspector about the same, to suggest remedial measures necessary to avoid the danger, to accompany inspector in case of complete inspection of the mine and also during such other inspection as may be considered necessary by the inspector. और इमरजेंसी का अलावा जब इंस्पेक्टर्स मीन्स विजिट करेंगे उसके लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर भी साथ में रहेंगे. तो ये क्लॉज बी और सी के लिए अगर इंस्पेक्टर वर्कमैन इंस्पेक्टर को बुलाएंगे कोई ड्यूटी के लिए तो इनका एडिशनली इस काम करेंगे. अदरवाइज क्लॉज ए में जो काम है, जो इंस्पेक्शन है, उसके लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना वीकली 2 days देंगे. 2 days में इंस्पेक्शन करेंगे. The workman inspector shall record a full report of matters ascertained as a result of his inspection in an interleaved page and bound register kept for the purpose in the mine in Form U. Workman's inspector making the entry in the register aforesaid shall duly sign an entries with date and take a copy of these entries for his record. वर्कमैन इंस्पेक्टर्स के रिकॉर्ड के लिए एक इंटरलिप्ड पेज बाउंड रजिस्टर्ड रहेंगे. उन्होंने
अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट इसमें भरेंगे और उसका एक कॉपी अपना रिकॉर्ड के लिए ले लेंगे। Action or report of workman inspector. The owner, agent, or manager of the mine shall enter in the register mentioned in sub-rule 2 of Rule 29 within a period of 15 days from the date of entry in the register. Remarks thereon showing the remedial measures taken and the date on which such action was taken. वर्कमैन इंस्पेक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसको 15 डेज के अंदर वो रजिस्टर्स ओनर एजेंट मैनेजर की तरफ से उसका एंट्री करेंगे और उसका जो एक्शन है, जो रिमेडियल मेजर्स है वो लेंगे। In case of any difference on opinion between the workman inspector and the owner agent or manager, a copy of the report with remark thereon regarding such difference of opinion shall be sent by the owner agent or manager to chief inspector or inspector for decision. अगर कोई ओपिनियन में कोई अलग है, चेंजेस है, डिफरेंस है ओनर एजेंट और मैनेजर के और वर्कमैन इंस्पेक्टर्स के अंदर, तो वो डिफरेंस ओपिनियन ओनर एजेंट और मैनेजर की तरफ से चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कंसर्न को भेजना है। नेक्स्ट, सेफ्टी कमिटी। For every mine wherein more than 100 persons are ordinarily employed, the owner, agent, or manager shall constitute a safety committee for promoting safety in the mines. वर्कमैन इंस्पेक्टर्स के लिए माइंस का ऑर्डिनरी एम्प्लॉय 500 पर्सन्स होना चाहिए। सेफ्टी कमिटी के लिए मिनिमम 100 पर्सन्स होने से भी सेफ्टी कमिटी का है। Provided that chief inspector or an inspector may, by general or special order in writing, record the owner, agent, or manager of any group of specified mines or all mines in a specified area to constitute a group safety committee in such manner and subject to such condition as he may specify in the order. 100% ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होने से सेफ्टी कमिटी गठन करना है और चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इसको जनरल स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे सकते हैं ओनर मैनेजर को एक ग्रुप ऑफ माइंस के लिए, अगर सेम सेफ्टी कमिटी एक ग्रुप ऑफ माइंस के लिए हो। कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमिटी। The safety committee shall consist of the manager, who shall be chairman, 5 official or competent persons of the mine nominated by chairman, 5 workmen nominated by the workmen of the mine in accordance with the procedure prescribed in clause A of sub-rule 1 of Rule 29Q for nomination of workman inspector. The workman inspector has so designated and safety officer who there is there is no safety officer, the senior-most mine official next to manager, who shall act as secretary of the committee. Provided that any other official, competent persons or person may be co-opted by the chairman as member of the committee on any day or days of the meeting if considered necessary. ये सेफ्टी कमिटी में मैनेजर चेयरमैन रहेंगे, 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन जिनको चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, 5 वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव। वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जैसे कि वर्कमैन इंस्पेक्टर्स के लिए नॉमिनेट किया गया जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है या जो मेजर यूनियन है या जहाँ पे यूनियन नहीं है वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसके माध्यम से ये चुना जाएगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर्स भी रहेंगे और सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे, जो कि सेफ्टी ऑफिसर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे माइंस मैनेजर के बाद नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन जो है माइनिंग ऑफिशियल्स वो रहेंगे सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। और कभी ज़रूरत पड़ने से
अदर ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन और पर्सन्स को कोऑप्ट मेंबर के हिसाब से चेयरमैन बुला सकते हैं कोई मीटिंग में। फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमिटी, द फंक्शन of committee shall be discuss remedial measures against unsafe conditions and practice in the mine as pointed out in the reports of workman inspector or otherwise brought the notice to the committee and make appropriate recommendation. रेमेडियल मेजर्स के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, इनका डिसीजन लेना है। अनसेफ कंडीशन या प्रैक्टिस जो वर्कमैन इंस्पेक्टर्स का रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया गया या अदरवाइज इस कमेटी के सम्मुख में लाया गया। To consider before commencement of operations in any new district of the mine or commissioning a new electrical or mechanical installation or introduction of new mining technique, the proposed safety and health measure including related code of practice to make appropriate recommendation. ये सेफ्टी कमेटी कोई नया डिस्ट्रिक्ट ओपन करने से, नया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने से या नया माइनिंग टेक्निक आने से इसका जो सेफ्टी का मेजर्स है उसका रिलेटेड कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रपोज करेंगे या अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन करेंगे। टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। ये एक्सीडेंट अगर हुआ तो उसका इंक्वायरी रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे और अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन भी देंगे। टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफ्टी कैंपेन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट। एक सेफ्टी कैंपेन करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे जो एक्सीडेंट की बेस का हिसाब से बनाया जाएगा। टू मीट एटलीस्ट वंस इन 30 days to consider the matter placed before it and any other matter that may be raised by the member and make such recommendation as it may deem fit. इस कमेटी 30 दिन में एक बार बैठेंगे और जो मैटर इनके पाया गया इसके द्वारा राइज किए गए और रिकमेंडेशंस इसको करेंगे। To serve as a forum for community on safety and occupational health measures, और ये कमेटी एक फोरम का हिसाब से काम करेंगे कम्युनिकेशन सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड मैटर के लिए। इस चैप्टर का आखिरी रूल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कब तक करना है। द ओनर एजेंट मैनेजर शैल विद इन period of 15 days from the date of receipt of the recommendation of the safety committee shall indicate to secretary to the safety committee action taken to implement recommendation. Owner agent and manager भी कोई स्टेप की रिकमेंडेशन मिलते हैं उसको 15 दिन के अंदर रिकमेंडेशन सेफ्टी कमेटी की इन सेक्रेटरी को इसको इंडिकेट करेंगे और इसकी एक्शन टेकन इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकमेंडेशंस के बारे में जानेंगे। अब हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का देख लेते हैं। Which of the following is true regarding the worker participation in safety management? Pit Safety Committee, Section 12 Committee, Tripartite Committee, option 1 and 2 and 3, none of the option. So, correct answer is option 1, 2 and 3. In Rule 29 C and D, worker participation in Pit Safety Committee. Section 12, worker participation in the committee. Tripartite committee including members from management, DGMS and representative of trade union and official association. So on A, B, C, both are correct. All three are correct. So the correct answer is option 1, 2
and 3. Next question. A person can be designated to act as workman inspector in mining discipline if he possesses a foreman certificate granted under the Act. He has at least 5 year experience in any mine, including at least 2 years in working in the mine for which he is nominated. He has undergone an ordinary training course for workman inspector in accordance with the syllabus specified by and at the center approved by chief inspector. Only A and B, B and C, A and C only. A, B, C. Correct answer is A, B, C. तीनों ही है मतलब option E is correct. We can see it rule 29Q 2ABC. A person nominated for workman inspector shall have a total experience of dash year in mind for getting nominated. 4 years, 6 years, 7 years, 5 years, 3 years. Correct answer is 5 years. 5 year total experience, including 2 years working experience in the mine concern. Composition of safety committee in a mine include manager, safety officer, workman inspector, and 5 nominated 5 workmen nominated by worker representative and 5 officials nominated by manager. 4 workmen nominated by worker representative, 6 officials nominated by manager. 6 workmen nominated by worker representative, 4 officials nominated by manager. 5 officials nominated by worker representative and 5 officials nominated by manager. 5 workmen nominated by worker representative, 5 workmen nominated by manager. Option A, 5 workmen nominated by workers representative and 5 officials nominated by manager. You can see in 29U. Next question. Which of the following statement is are true? For every mine wherein 500 or more persons are ordinarily employed, the owner, agent, or manager shall designate 3 suitably qualified employed for the mine as workman inspector. Workman inspector shall be designated in consultation with the registered trade union in the mine, and where there is more than one registered trade union, the union recognized as per the procedure in practice. When the number of persons employed in mine exceed 1500, workman inspector shall be assisted by one additional workman inspector in mining discipline for every additional 1000 persons. Option A and B only, B, B and C only, C, A and C only, D, A only, E, A, B and C. Correct answer is E, A, B and C. You can find it in 29Q. Next question. What do act as chairman and secretary to the safety committee as per the mines rule? Owner and manager, safety officer and workman inspector, manager and safety officer, welfare officer and safety officer, none of the options. Correct answer is manager and safety officer. In 29U, safety committee shall consist of manager who shall be chairman, the safety officer, or where there is no safety officer, senior most mine official next to manager who shall act as secretary of the committee. Next, under Rule 29Q, the mines rule and a person can be appointed as workman inspector if he has at least dash year of experience in any mine, including dash years of experience in the mine for which he is nominated. It is 5 and 2, 3 2, 5 3, 5 1, 5 3 10, 5 2. Correct answer is 5 2. Which is not function of safety committee?
to discuss remedial measure against unsafe condition and practice in mine, to serve as a forum for community on safety and occupational health matter, to inquire into canteen regularities, to formulate and implement appropriate safety campaigns, to meet once in every 30 days to consider the matter and place before it, to inquire into the canteen irregularities. This is not function of the safety committee. This is the function, you can see it 29b. Thank you. Thank you for watching this video. You can find more videos in this chapter.